Hi, all of you. Today we are going to start with some interview questions, and we are going to go through about the job description of one of the company that we are seeking a detailed oriented and experienced R2R accountant to join F&A team, finance and account team. As a R2R accountant, you will be responsible for applying generally accepted accounting principle. Means the person who are hiring by the company should have a knowledge of generally accepted accounting principle to analyze financial information. Second part is reconcile financial statement. Means second part is related to the reconciliation. The person should have a knowledge of reconciliation and then assist in budget development and prepare accounting standard and financial report for the management. Means candidate should supply all the information to the management for preparation of budget. And third part is prepare standard accounting and financial report for the management. Means whatever the ad hoc work should be supplied by the management should be prepared by the candidate as well. So here is four bifurcation of this job description, and according to this I have prepared some questions related to the interview. Here first is related to the what is meant by gap. So gap means generally accepted accounting principle. It is used in US. So I have prepared another video, separate video for this. You can watch this video in my YouTube channel. So our next part is what is meant by accrual. So interviewer can ask uh, frequently ask about the accrual. So accruals are the amount of money that has been earned or spent. Means whatever we have supplied these services or we have received these services, but we have not paid the money or received the money from the person to whom we have supplied the services or we have received the services. But according to accrual concept, we need to record that transaction in our books of account. So accrual means outstanding money uh, which we need to pay in future or receive in future should be recorded in our books of account. So next part is of this job description. Here this job description is I have bifurcated into different part. First part, then here is second part, then if you see I have prepared here third part, then fourth, fifth and sixth. So if you see, compile and analyze financial information in preparation for entry into various financial statement and accounting report and make appropriate journal entry for recording in general ledger by checking calculation, reviewing the basis for figure and balancing and reconciling the figure. Means candidate should prepare calculation sheet and according to that prepare the journal entries. So I have seen interviewer can ask this kind of questions. I have prepared here. If you see, like B Limited paid the rent on behalf of A Limited. Means जो रेंट था आपका वो ए लिमिटेड का था और उसको पे किया है बी लिमिटेड ने, और किसको पे किया है, सी लिमिटेड को पे किया है. व्हाट आर द एंट्रीज वी नीड टू पोस्ट इन दैट केस. तो इस केस में हम कौन सी एंट्री पोस्ट करेंगे. सो ए क्या एंट्री पोस्ट करेगा, बी क्या एंट्री पोस्ट करेगा एंड सी क्या एंट्री पोस्ट करेगा. इन दैट केस जो रेंट है, रेंट ए का है तो ए एंट्री क्या पोस्ट करेगा. अगर ए को पे करना होगा रेंट तो एंट्री ए पोस्ट करेगा रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. बट हियर अभी हमको देना है रेंट सी लिमिटेड को, तो पहला एंट्री होगा रेंट अकाउंट डेबिट टू सी लिमिटेड और फिर ये एंट्री होगा हमारा सी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बी लिमिटेड. क्योंकि ये एंट्री हमने इसलिए पोस्ट किया है क्योंकि अभी हमको देना बाकी है, हमने दिया ही नहीं है पैसा, बी लिमिटेड को देना है. इवन सी लिमिटेड को देना था हमको
क्योंकि हमने अभी तक पैसा अपने पास से रिलीज़ ही नहीं किया, हमने बी से दिलवा दिया सी लिमिटेड को, तो हम पहले एंट्री पोस्ट कर रहे हैं रेंट अकाउंट डेबिट टू सी लिमिटेड कि हमको देना है सी लिमिटेड को, और ये दिलवाया हमने किससे है, बी लिमिटेड से। सो इन दैट केस अभी भी हमारा क्रेडिटर तो खड़ा ही है, चाहे वो सी लिमिटेड हो चाहे वो बी लिमिटेड हो। तो अब हम क्योंकि हमने पे क्या करवा दिया है सी लिमिटेड को, तो हम लोग सी लिमिटेड को रिमूव करेंगे एज अ क्रेडिटर एंड बी लिमिटेड को अपना लायबिलिटी बनाएंगे, क्रेडिटर बनाएंगे, और आवर एंट्री विल बी सी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बी लिमिटेड। सेकंड पार्ट इस बी लिमिटेड, बी लिमिटेड का कुछ लेना देना बनता नहीं था, लेकिन इसने पे किया ऑन बिहाफ ऑफ ए लिमिटेड, चाहे ये ए लिमिटेड के कहने पर दे सी लिमिटेड को, चाहे ए लिमिटेड को दे पैसा, किसी को भी ए लिमिटेड खुद ले पैसा या किसी को दिलवाए, एंट्री यही होगी ए लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक, कि भाई इसने ए लिमिटेड को दिया, ए लिमिटेड खुद पैसा ले या ए लिमिटेड सी को पैसा दिलवाए, बोथ केस में ए लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक होगा। और इफ़ यू वांट इंटरमीडिएट एंट्री, ठीक है, अगर हमको एक इंटरमीडिएट एंट्री पोस्ट ही करना है कि हमने सी लिमिटेड को दिया था ताकि एक ट्रैक हो सके, सो इन दैट केस वी विल पोस्ट द एंट्री सी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक, कि भाई हमने सी लिमिटेड को पैसा दिया, फिर हम लोग सी लिमिटेड को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से हटाएंगे। इन दैट केस आवर एंट्री विल बी ए लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू सी लिमिटेड। इफ़ यू सी लिमिटेड को हमने एक बार डेबिट किया, सी लिमिटेड को हमने एक बार क्रेडिट किया, तो वो ऑटोमेटिकली हमारी बुक से हट गया। अब हमारे बुक्स में आया ए लिमिटेड। इफ़ यू सी अल्टीमेट रिजल्ट ऑफ दिस एंट्री इज ए लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बी लिमिटेड। देन अब हम आते हैं सी लिमिटेड पे। सी लिमिटेड इज रिसीविंग द मनी। सो सी लिमिटेड का लेना किससे बनता था, ए लिमिटेड से, ए लिमिटेड खुद दे या फिर बी लिमिटेड से दिलवाए। एंट्री हमारी क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू ए लिमिटेड। अगर इसको इंटरमीडिएट एंट्री पोस्ट ही करनी है, ट्रैक करना है कि हमको किससे पैसा मिला था, बी लिमिटेड से मिला था, ये सही बात है, बैंक अकाउंट डेबिट टू बी लिमिटेड। देन मिलना किससे चाहिए था, मिलना चाहिए था ए लिमिटेड से। सो वी विल रिमूव बी लिमिटेड फ्रॉम आवर बुक्स ऑफ अकाउंट, बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट हियर टू ए लिमिटेड। बी लिमिटेड को हमने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में यहाँ दिखाया और यहाँ पर रिमूव कर दिया। अब अल्टीमेट रिजल्ट ऑफ दिस एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिट टू ए लिमिटेड। ए लिमिटेड खुद दे या किसी से दिलवाए, दोनों ही केस में हमारी एंट्री यही होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू ए लिमिटेड। अगर हमको इंटरमीडिएट एंट्री पोस्ट करनी है तो हम लोग ये पोस्ट कर सकते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट इज द एंट्री ऑफ परचेज। इंटरव्यूअर कैन आस्क दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन वेरी फ्रिक्वेंटली कि चलो थोड़ा टाइम पास करते हैं कैंडिडेट के साथ, तो इजी एंट्रीज पूछते हैं वो लोग। देन इन दैट केस द एंट्री ऑफ परचेज इज परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक कैश। अगर हमने नगद में खरीदा देन हम लोग बैंक और कैश यूज़ करेंगे, अदरवाइज वी विल पोस्ट एंट्री क्रेडिटर परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर account 10,000. And what will the entry of sale? In that case our entry will be, because we are receiving the money, in that case bank account debit to sales, cash account debit to sales. If we are not receiving the money, so in that case our entry will be debtor account debit to sales account. If you see here, if this debtor not giving us money and we know that this money will not receive in future, so in that case this amount is our bad debt. So interviewer can frequently ask what is the entry of bad debts. So our entry will be bad debts account debit to debtor account, because if you see when we have sell the goods to the debtor, so our entry will be debtor account debit to sales. So after some time we will know that this money will not receive by us. In that case our entry will be bad debt account debit to debtor, because
हमको ये पता लग चुका है कि अब पैसा नहीं मिलेगा, तो डेटर डेबिट किया था जब हमने सामान सेल किया था, बिकॉज हमको पैसा नहीं मिलने वाला, इन दैट केस हम लोग इसको क्रेडिट कर देंगे और डेबिट हम करेंगे बैड डेट्स को. आई होप it is understandable for you guys. So our next part will be what is the entry of bad debt recovered. Like हमने bad debt दिखा दिया था जो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में था डेटर, अब हमारे और इसको पिनल में दिखा दिया था. अब हमारे पास पैसा रिसीव हो जाता है मान लो अगले साल, तो इन दैट केस व्हाट विल बी द एंट्री. So in that case our entry will be bank account debit to bad debt recovered, because we are receiving the money through the bank, or if we receive the money in cash, so our entry will be cash account debit to bad debt recovered, because we are already remove the debtor from our books of account here. So next part, interviewer can ask if this is a tricky question which interviewer can ask in an interview. I have seen that it is an analysis based question, like we have taken warehouse on a rent on 1st of Jan 2025, and in the month of 1st of November 2025 we have received an invoice value rupees 1,20,000, and we have paid the whole amount on 30th of November 2025. What will be the entry in that case? For this kind of question you need to prepare with the pen and pencil in the interview, so that you need to write down all the question, and you will give the answer according to the transaction. If you see here, we have taken warehouse on 1st of January onwards, and means हमने warehouse लिया है 1st of January को, और हम इसको यूज़ करते हुए आ रहे हैं ऑनवर्ड्स, एंड इन द मंथ ऑफ 1st of November 2025 फर्स्ट, और जो इसका रेंट है ₹10,000 है, एंड इन द मंथ ऑफ 1st of November वी हैव रिसीव द इनवॉइस, और 1st of November को हमको इनवॉइस रिसीव हुआ है, वैल्यू है उसका 1,20,000, एंड वी हैव पेड द होल अमाउंट ऑन 30th of November, और 30 नवंबर को हमने 1,20,000 रुपये पूरे साल का पे कर दिया है. सो व्हाट विल बी द जनरल एंट्री फॉर दिस काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन. सो हम 1st जनवरी को क्या करेंगे, एंट्री पोस्ट करेंगे रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट और रेंट अक्रूवल 10,000. देन फैब टू 30th of October we will post an entry rent account debit to outstanding rent account debit to outstanding rent account debit to outstanding up to 30th of November. We will post the same kind of a journal entry. So our total amount up to the 30th of November will be 10,000 multiplied 10, that is 1 lakh rupees, and then we will post the entry. Then on 1st of November we have received the invoice. So interviewer can ask, should we post the entry of should we prepare the entry for the receiving of invoice. So in that case जो भी हमको इनवॉइस रिसीव होता है उसकी कोई भी एंट्री नहीं होती है, हम ट्रांजेक्शन की एंट्री करते हैं, हम डॉक्यूमेंट की एंट्री नहीं करते. नो एंट्री ऑफ इनवॉइस रिसीव, बिकॉज वी ओनली पोस्ट द एंट्रीज only related to the transaction, not related to the document. हम डॉक्यूमेंट से रिलेटेड एंट्री नहीं करते, हम ट्रांजेक्शन से रिलेटेड एंट्री करते हैं अकाउंट्स में. सो वी डू नॉट रिकॉर्ड दिस द एंट्री ऑफ 1st of November related to the invoice. So our entry will be on 30th of November outstanding rent or rent accrual account debit, that is 1 lakh. If you see our total amount up to the 30th of November 30th of October will be 1 lakh. So we will post the entry outstanding rent or rent accrual, that is 1 lakh, and we are going to pay the rent in advance, that is 10,000 for the month of December 25. So it is a advance rent, or we can say prepaid rent, and
For the month of November, we will post the entry rent account debit 10,000, and our entry will be to bank, that is 1,20,000. So here is the entry of accrual. It is related to the December month and it is related to the November month. If you see here, November 25, it is related to the Jan 25 to December 25. So after then, interviewer can ask this kind of here is the first part of this job description. Then next part is related to the budget. Interviewer can ask about the budget. So here is review budget, revenue, expense, payroll entries, invoice and other document, and research and resolve discrepancy, maintain and coordinate accounting control procedure by analyze revenue and expenditure trend and recommend appropriate budget levels to ensure expenditure. Here they are not asking you to prepare the budget, but they can ask you the questions related to the budget, because you are going to help them for preparing the budget. So for interviewer can ask about the what is by the budget. So our question will be, a budget is a plan that help us to know how much money you expect to earn and how much you plan to spend over a specific period. Means it is a estimation related to the revenue and expense you will be receiving or expense of in a particular period of time. आप जो भी खर्चा करने जा रहे हैं या इनकम कमाने जा रहे हैं, उसका प्लान बनाने को ही हम बजट कहते हैं, इन अ सिंपल वे. इट budget is a estimation of revenue and expense. So next part will be type of budget. कितने टाइप के बजट होते हैं? फर्स्ट इज सेल्स बजट, related to the sales, means estimates future sales. It start the whole planning process. Means हम कितना सेल करने जा रहे हैं उसके लिए सेल्स बजट बनता है. what we are doing production, what will be we are producing, for that we will make the production budget. For expense or revenue we will prepare the cash budget, and there is a fixed budget and flexible budget and also the operating budget. जो डेली का खर्चा और खर्चा होता है उसके लिए हम लोग ऑपरेटिंग बजट बनाते हैं. ऑपरेटिंग बजट मीन्स कवर्स डे टू डे कॉस्ट लाइक सैलरीज, रेंट एंड यूटिलिटीज़. हम जो सैलरीज़ के लिए पे करते हैं, हमारा रेंट जो पे होता है उसके लिए हम ऑपरेटिंग बजट बनाते हैं. फ्लेक्सिबल बजट बनता है हमारा एक हम किसी प्रोडक्टिविटी को हम इंक्रीज़ करने जा रहे हैं. मान लो हमारा पहले 80% प्रोडक्टिविटी थी, हम प्रोडक्टिविटी अब उसको बढ़ाने जा रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग फ्लेक्सिबल बजट बनाते हैं. फिक्स बजट होता है कि मान लो कि हमारा हमको रेंट पे करना है, हमारा एडवर्टीज़मेंट है, जो हमारा खर्चा होना ही होना, उसके लिए फ़िक्स बजट हम लोग बनाते हैं. फिक्स बजट, हेयर इज सम एग्जांपल ऑफ फिक्स बजट लाइक रेंट 20,000, हमारा खर्चा देना ही देना है. सैलरी ऑफ स्टाफ 50,000 पर मंथ. डेप्रिसिएशन 10,000. इंश्योरेंस 5,000. ऑफिस सप्लाइज 2,000. सो टोटल फिक्स बजट इज 87,000. So if you see, so next is difference between budget and forecast. What is the difference between budget and forecast? Like for a budget, like we have a productivity to make a product is 50,000 units, but according to the market we need to prepare our outputs. So that is called a forecast. Means budget is a financial outline expected revenue and expenses over a period of time, often a year. Means बजट जो होता है हमारा एक साल के लिए हम लोग बना लेते हैं कि इतना खर्चा होगा और इतना इनकम होगा, बट फोरकास्ट हमको
according to the market, according to the relevant factors हमको चेंज करना होता है कि हमारा प्रोडक्टिविटी तो हम 80,000 बना सकते हैं, मगर डिमांड ही अगर हमारा 50,000 है, सो वी विल प्रिपेयर द फोरकास्ट अकॉर्डिंग टू दैट कि हमको कितना बनाना चाहिए। अगर हमारा प्रोडक्शन मान लो कि 80,000 यूनिट्स है, मगर हमारा जो डिमांड है वो 50,000 यूनिट्स है, तो हमको 50,000 यूनिट बनाना चाहिए, और अकॉर्डिंग टू दैट वी विल recognize our revenue and expense. So here I have written that a budget is a financial plan outline expected revenue and expense over a specific period often a year. ये स्पेसिफिक पीरियड के लिए होता है, रेवेन्यू एक्सपेंस के लिए। अ फॉरकास्ट इज अ एस्टिमेट ऑफ फ्यूचर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा। हिस्टोरिकल डेटा के बेस पे बनता है ये फोरकास्ट। करंट ट्रेंड, हिस्टोरिकल डेटा हमारा कह रहा है कि लास्ट साल हमारा 80,000 यूनिट सप्लाई हुआ था, लेकिन करंट ट्रेंड ये कह रहा है कि हमारा 50,000 यूनिट सेल होगा, और अदर रेलिवेंट फैक्टर्स कह रहे हैं कि हमारा 50,000 यूनिट ही सेल होगा, तो हम लोग 50,000 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे। बट बजट हमारा कह रहा था कि हमको 80,000 यूनिट प्रोड्यूस करनी चाहिए, फोरकास्ट हमारा कह रहा है 50,000 यूनिट प्रोड्यूस करनी चाहिए। सो बजट हमारा फिक्स होता है एंड फोरकास्ट हमारा फ्लेक्सिबल होता है, यू कैन से। देन आवर नेक्स्ट पार्ट विल बी, इफ यू सी हियर, maintain an budget revenue. Then next part is related to the revenue. So interviewer can ask you about the journal entry of revenue. So you can give an example like bank account debit to interest received. That's an entry of revenue. You can give more example like bank account debit to sales account. Then you can give them an example of bank account debit to commission received. That's a entry of revenue. Then interviewer can ask you the entry about the expense. I have given an example of payroll here. That is interviewer can ask you about the entry related to the payroll and expense. So payroll is also an expense, so I have given an example here. Salaries account debit to outstanding salary. First we need to accrue the salary in our books of account, then we need to pay it. So our entry will be outstanding salaries account debit to bank. It is the entry of payroll. Then interviewer can ask you about the invoices, like types of invoices, how many invoices have you seen. So you can give them two kinds of invoices. There are lots of invoices as well. So I have written here two kinds of invoices. Like first is performa invoices. Performa invoices is not an invoice. A preliminary invoice sent before a sale is finalized and provide a quote or estimate. Means it is it is just like an explanation that we will provide the goods to you according to this price, and this is a cost, and this is a tax. And here is a tax invoice. Invoice means include the amount of tax such as GST charges on transaction. So here is two type of invoices. That's a performa invoice and tax invoice. You can give the example to the interviewer as well in about these kind of invoices. Then third part is perform bank reconciliation and wire transfer for deposit and make mortgage payment and distribution. So according to this I have given the example below. Like here is a bank reconciliation, there are lots of reconciliation as well. So interviewer can ask you about the what is meant by the reconciliation. So in accounting, reconciliation means comparing two sets of record, usually financial, to ensure they match and are accurate. Like we have a bank statement and cash book which we need to reconcile, and we have a vendor reconciliation as well, matching the balance of invoices received and payment to the vendor.
with our system. So रिकन्सिलेशन होता क्या है, आपके दो रिकॉर्ड्स हैं अलग अलग जगह पे, एक आपका बैंक के पास है, एक आपके सिस्टम में जो रिकॉर्ड है, उनको दोनों को मैच करना ही आपका रिकन्सिलेशन है। चाहे आपका वो बैंक रिकन्सिलेशन हो या फिर वेंडर रिकन्सिलेशन हो। वेंडर रिकन्सिलेशन में क्या होता है आपका कि यू नीड टू मैच द अमाउंट of invoices which is in our system and which is supplied by the vendor in SOA. That SOA means statement of affairs, which supplied by the vendor to us related to the invoices. होता क्या है कि जितना भी हम सामान खरीदते हैं उसके लिए एक अलग से एक्सेल सीट में हमको दे दिया जाता है कि इतना सामान हमने खरीदा है, उसके इन्वॉइसेस दे दिया जाता है, और जो हमसे पेमेंट रिसीव हुआ रहता है वेंडर को वो दे दिया जाता है, और हमको मैच करना होता है वो पेमेंट और इन्वॉइसेस, परचेज और पेमेंट्स विद आवर सिस्टम। तो हियर आई हैव रिटन मैचिंग द बैलेंस ऑफ इन्वॉइसेस रिसीव्ड एंड पेमेंट टू द वेंडर विद आवर सिस्टम। इंटरव्यूअर कैन आस्क यू अबाउट द टाइप्स ऑफ रिकन्सिलेशन, कितने टाइप्स ऑफ रिकन्सिलेशन आपने देखे हैं। सो यू कैन गिव देम एग्जांपल लाइक आई हैव सीन बैंक रिकन्सिलेशन, वेंडर रिकन्सिलेशन, प्रीपेड रिकन्सिलेशन, एसेट रिकन्सिलेशन, डेटर रिकन्सिलेशन। बैंक रिकन्सिलेशन में हम लोग बैंक स्टेटमेंट और हमारे सिस्टम में डिफरेंस देखते हैं। वेंडर रिकन्सिलेशन में हमको जो वेंडर से इंफॉर्मेशन सप्लाई होती है पेमेंट और इन्वॉइसेस की, वो हम लोग अपने सिस्टम से चेक करते हैं कि वो हमारा डला है कि नहीं डला। प्रीपेड रिकन्सिलेशन में हमने जो अमाउंट हमने पे किया था साल के शुरुआत में, फॉर एग्जांपल 1 लाख फॉर सम एडवर्टीजमेंट एंड वी हैव टू amortize दैट अमाउंट in a particular period of time, like I have paid the amount 1 lakh rupees in the beginning of the year, and so so I need to amortize that amount by 12. So for example, I have given 1,20,000, so in a particular month I will amortize 10,000 by our calculating sheet. So here प्रीपेड रिकन्सिलेशन में क्या होता है, जो हमने अमोर्टाइज किया प्रॉपर किया कि नहीं किया। फिर हमारे पास आता है एसेट रिकन्सिलेशन। एसेट रिकन्सिलेशन में हम जीएल और सब लेजर को रिकन्साइल करते हैं। देन वी हैव अ डेटर रिकन्सिलेशन। डेटर रिकन्सिलेशन में हम क्या करते हैं कि जो डेटर को हमने सामान बेचा है और उसे जो हमने सेल किया है और उसके बदले में जो पैसा आया है उसको हम लोग रिकन्साइल करते हैं। इट शुड बी मैच विद आवर सिस्टम एज वेल। Then next part is what is meant by wire transfer for deposits. Wire transfer क्या होता है? Wire transfer, it is a online mode to transfer the payment, and for that this kind of transaction we need a full name of that person to whom we are transferring the money. We name we should know the name of the bank, address, account number, and there is a swift code also for transferring that payment in to that particular person. So our next part is what are the entries related. Then our next part is analyze and review accounting and financial resources for acquisition, deposition, closing and budget and expenditure for local, state, federal, and provide funding, contract, grant, and corporate finance and accounting transaction. Then review fixed asset, placing asset in service. I have prepared already a video for plant property equipment. You can watch this video from my channel. So I have given an example below, like if an interviewer wants some entries like what is the entry of purchase and asset, so you can give an example like asset account debit to bank, because our money is going, so our bank will be credit, and we have purchased the asset, so asset will be debit. So asset account debit to bank. Then they can ask you entry related to the depreciation, or they can ask you what you mean by the depreciation. So here you can
give the example that depreciation is the reduction in the value of an asset due to use. जो भी यूज़ करने की वजह से एसेट में गिरावट आती है उसको हम डेप्रिसिएशन करते हैं. और आवर एंट्री विल बी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट. देन when we need to charge the depreciation, so in that case our entry will be when asset is in put to use. Like I have purchased an asset on 1st of Jan, but the asset is ready and put to use in the month of Feb, so I will post the depreciation in the month of Feb onwards. So interviewer can ask next question from you that can we charge depreciation on a land. So in that case you simply say no, depreciation cannot be charged on land because it is a non-depreciating assets. There are lots of exception as well in that case. Like जो माइंस होती है वहाँ पे डेप्रिसिएशन लगाया जाता है, वो डेप्रिशिएटिंग एसेट होती है, बट वहाँ पे डिप्लीशन यूज़ होता है, वो डेप्रिसिएशन नहीं होता. सो normally if interviewer can ask you about the land, so you can generally say that no depreciation cannot be charged on a land because it is a non-depreciating asset. Then interviewer can ask you about the impairment. So what do you mean by the impairment? Impairment is a sudden reduction in the value of an asset. Like I have purchased an iPhone for rupees 1 lakh, but after some time I came to know that technology is obsolete or waste for me. So in that case I am going to purchase another phone, or according to this company can also retire that asset, so that the value of that asset will be zero, or there will be a something in that case, but the original value of that asset will be decrease. So what do you mean by the impairment? Impairment is a sudden reduction in the value of an asset, like no useful use of an asset due to technology updation. अगर हमने कोई टेक्नोलॉजी की वजह से हमारा जो एसेट है वो बेकार हो गया, तो उसको हम लोग इम्पेयरमेंट कहते हैं, I would say. So next part of this job description is act as a liaison to internal or external auditor by explaining journal entries and financial transaction, provide research data and information as requested, and answering question necessary to complete the audit on time. So here here is job description that you need to help the internal and external auditor and provide the data and supportings and mails to the auditor for their help. So I think there is no chance to ask any question from this. Yeah, they can generally ask you, are you able to help to the internal and external auditor? You can say yes, why not, I can I have a knowledge of accounting, so I can provide information to the internal and external auditor as well. So next part of this JD is communicate with on-site and other property managers to assist in completing pre-close and close activity, answer questions, provide support, and ensure timely completion of accounting process for on time client and companies. So here is pre-close. इट मीन्स कि आपको कम्युनिकेट करना है, जो प्री क्लोज और पोस्ट क्लोज एक्टिविटीज़ होती हैं उनके ऊपर काम करना होगा. तो आप इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं इंटरव्यूअर की नाउ इस in this case interviewer can ask you about what are the checkpoints you need to check before closing your books of account. So pre-close activities means helping in checkpoints before closing the books of account. What is the checkpoints before closing the books of account means आप कौन से चेक पॉइंट्स को चेक करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करने से पहले.
So here you can give the example. In the asset side, you need to checking the depreciation posted or not, checking amortization posted or not. And in the liability side, you need to check whether payment has been done or not. In the expense side, you need to check payment like salaries, rent, expense has been done or not. Means you have the payment to all the person to whom you need to pay, or before the cutoff time. Entries of accrual related to the expense and revenue posted or not. Means you need to check whether accrual amount has been posted or not. Then in a revenue side, you need to check sales, interest, commission received entry posted or not, and then follow up on open item done or not. Then next part is close activities, work on open item after closing the books of account. Means it is a general term that after closing your books of account you need to work on an open item. Then next part of this is related to the complete various financial, accounting, administrative and under report and analyze, perform other duties as assigned. It is a general work. जो भी आपको काम दिया जाएगा वो आपको करना होगा, ये normal है. But before going for an interview, you need to verify and check what is the ask of the interviewer. So I hope it will be fruitful for you guys. Before going in any interview, you need to check what is the ask of the company, so that you need to prepare your interview according to that. It is a one job description. I will make more videos according to the job description provided by the companies. So thank you guys for watching this video. If any person want this video, please supply or forward it to that person, so that they can prepare according to the demand of the company. Thank you, thanks a lot.